Dear students, today we are going to start mathematical logic exercise 1.5. Question number 2. Construct the switching circuit of the following. First one, negation of P and Q or P and negation R. So in this question what we have to do, first we have to consider for all the different statements different switches. So we see that there are three different statements P, Q and R. So we should consider P for the switch S1 and Q for the switch S2, R for the switch S3 and L the lamp L. Now see the symbolic form of the switches. First set is the negation P and Q. So first set is the negation P and Q and means series, and then R means it is branch line, and again P and negation R. So how to draw the diagram or switching circuits? So we see that here this is negation P and Q. The negation P means S1 dash, Q S2, P S1, negation R S3 dash. So how to write? So first we draw the battery and then the connections. After that there are first bracket, second bracket, two brackets. So there are two brackets and in between them OR symbol. So we should take here two branch lines, two branches. In the first branch now we see a bracket. There are P, negation P and Q. So we should write here negation P for S1 dash, and means it is continue, that is series connection. Q, that is S2. So S1 dash and S2. For the second bracket P and negation R, so we should write for P it is S1 and that is continue circuit, negation R that is S3 dash, and then it is closed and continue connections, it is to lamp L and it is connected to the battery. So this one is battery. Once again, first you have to draw battery and lamp L and this one connection. After that, after going, then you have to check how many brackets are there or how many different sets are there. If it is or in between them, so we should take two branch lines. Now they are this bracket or this bracket means they are in parallel. Here it is two branch lines, in between them and means continue, in between them and means continue. Now identify the switches, negation P that is S1 dash and Q continuous S2, P that is S1 and that is continue, negation R S3 dash. So this is switching circuit, or you can say diagrammatic form of the logical statement or switching diagram. Okay, now see question number second. Second one, P and Q or negation P and negation Q or P or R. So dear students, here we have considered these statements for P, Q, R and lamp L for all the sub questions. So anywhere if it comes S1, so you have to consider P, S2 you have to consider Q, and S3 you have to consider R, L the lamp L. So these considerations for all the sub questions. So it is given here the logical statement. So what does it mean? Now see, first it is P and Q, then R, and then one more set. So first we draw here a battery and this connection. First we separate into two branch lines, this line and this line, right? So what is in the first bracket? In the first bracket P and Q means P for switch S1 and Q for switch S2, and it is continuous, it is and means it is in series. So S1 and S2. After that we see that R in between them. Now go in the second branch and start from first letter. It is negation P. Negation P means S1 dash, and then it is continue. Then we see that in the bracket there are three switches and in between them OR symbol, right? So we should distribute in three branch lines, 1, 2 and 3. Three branches. Negation Q that is S2 dash or P S1 or S3. This one. Now see once again for the second bracket only, negation P S1 dash and continuous. Now there are three switches, so three branch lines, 1, 2 and 3. One switch in each
and write their names, negation Q, S2 dash, P, S1 or S3, and then close this line, and again continuous, and close this branch, and connect here. We get this side and connect to lamp L, and this is a battery. Clear? So this type of the diagrams are very important. They can ask in any exam. Now see third one. In third question, it is given that P and R, or negation Q and negation R, bracket closed, and negation P and negation R. So we see that here first main bracket up to rectangular bracket. In this bracket there are two brackets, P and R, and negation Q and negation R. So first we start from battery. It is connection. How many branch lines are there? Two branch lines, and they are in series. But in the first bracket they are in parallel. So first we start here, it is this, and there are two branch lines for the first bracket, P and R, PR, that is switch S1 and switch S3, or that is now second branch line because they are in parallel, negation Q means S2 dash, and this one is AND means continuous, negation R, this is S3 dash. Now close the branch line because bracket is closed, and then AND symbol means it is continuous. So negation P and negation R. So negation P means switch S1 dash, and negation R means switch S3 dash. In between them AND sign, so they will be continuous, no branch line here, and then it is connected to lamp L, and here connected to battery. See once again, P and R, they are in series, so S1 and S3, or that is branch line here, they are AND, so S2, this is negation Q, negation R, so S2 dash, S3 dash, again it is AND, then it is continuous, negation P and negation R, so S1 dash and S3 dash. This is the switching circuit of the given logical statements. So dear students, you should consider here P for the switch S1, Q for the switch S2, R for the switch S3, and L for the lamp L. तो सभी स्टूडेंट को बहुत ही केयरफुल्ली यहाँ पर सब कंसिडर करना है, क्योंकि एग्जाम में तो कोई एक क्वेश्चन आने वाला है स्विचिंग सर्किट के लिए। तो यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चंस में नहीं दिया है, केवल फर्स्ट क्वेश्चन में इसके सिंबॉलिक फॉर्म को लिख दिया है, राइट, बट यू हैव टू राइट इन द ऑल क्वेश्चंस एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस। और डियर स्टूडेंट्स, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड देन कंटिन्यू। Now see question number 4. P and negation Q and R, or P and negation Q or negation R. So how many brackets are there? How many sets? First set and it is second set. So in the first set we see that and means it is continuous, means they are in series, or that is branch line, and it is P and continuous, but here it is OR, so we should take here branch line. So how will you make the switching circuit diagram? Now see this explanation. This is the battery and it is a connection here. After that, they now see that there is OR symbol. So we should take branched lines in the first bracket, S1 and S2 dash and S3, because of P and negation Q and negation R. P means switch S1, negation Q switch S2 dash, and R means S3. After that R, now see the second means branch line here. This is second bracket, P switch S1, and then we see that R. So again two branches in this circuit, in this wire. So we should take here S2 dash for negation Q or negation R. So it is S3 dash. Now close the circuit here, and again connection here, and this is the main connection, and continue here. It is to lamp L, and it is a battery. Now they are connected. The arrows shows direction of the current. Clear? So hope you are understanding this diagram.
Very well. Now see question number 5. In fifth part, P or negation P, P or negation P, or negation Q, or P and Q. So first we observe that there are four terms are there: first, second, third, fourth, and in between them or, right? So there are four terms. First we take from the battery, this is the main branch, and then distribute into four different branches because of four different terms, four different branches. So first one, S1 means P, negation P, S1 dash, negation Q, S2 dash, or P and Q. So there in the fourth branch there are two switches, P that is S1 and Q that is S2. Now all these four branches are closed here and it is continue to lamp L, and this is battery. Clear? This side and this is this side. तो अच्छे से समझ में आया कि नहीं? आ गया हो तो आगे चलते हैं फिर अभी. Clear? So it is very clear. So take the next question. Now sixth one. What is the logical statement in question number 6? P and Q or negation P or P and negation Q. So how many different branches are there? First, second, third. Means there are three different sets. So we start from battery. This is the connections. After this, there are three different switches and three different sets, and in between them or symbol used. Means they are in parallel. So we distribute in three different branch. First one, second one, third one. In the first branch, we see that two switches P and Q. So for P, switch S1, for Q, switch S2, and it is AND, that is in series. Or means second branch now, only one switch, negation P means S1 dash. Or that is third branch, there are two switches and they are in series, AND means they are in series. So P means switch S1 and negation Q means switch S2 dash. Now close the branches and continuous, it is connected to lamp L and this side from battery. Clear? But here you have to write P for the switch S1, Q for the switch S2, and R for the switch S3, L the lamp L. But here R is not given. For the other questions you have to consider. So don't forget, you have to write in all the 6 questions symbolical form, symbolic meanings S1, S2, S3 and lamp L in terms of P, Q, R. ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया पूरा कंप्लीट. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और लेते हैं इसका सोल्यूशन कि इसका सोल्यूशन क्या है. क्वेश्चन 3, गिव एन ऑल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट्स फॉर द फॉलोइंग सर्किट्स. So see once again, give an alternative equivalent simple circuits for the following circuits. So what does mean? This means you have to translate first given circuit in the symbolic form. Given circuit in the symbolic form means in terms of V and Q. After converting in the symbolic form, you have to simplify it. What you have to do? Simplify it by using rules. Which rules? Remember this. The rules are distributive law, complement law, identity law, associative law, De Morgan's laws, identity laws, etc. Means logical tables rules. Logical tables rules. So you have to convert first them in simplified form. After getting last step, you have to draw the circuit again. Means इसी सर्किट को अगर हम मॉडिफाइड फॉर्म में लाना चाहते हैं तो उसका मॉडिफाइड फॉर्म क्या होगा वो हमें करके देखना पड़ेगा कि अगर हम इतने बड़े सर्किट को मॉडिफाई कर दें तो छोटा हो जाए. तो डियर स्टूडेंट्स, इस टेक्नोलॉजी का यूज आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है इन द मॉडर्न फिजिक्स और यू कैन से इन द इलेक्ट्रॉनिक्स. जैसे अभी आजकल हमारे सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस
बहुत ही मॉडिफाइड फॉर्म में आ रहे हैं, मोबाइल, कैलकुलेटर, टीवी, कंप्यूटर। तो इसी स्विच का वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है आजकल। और ये आगे चल करके आप लोगों को बहुत अच्छा ही क्लियर होगा, बहुत अच्छा इसका इम्पोर्टेंस मिलेगा कि ये क्यों दिया गया है लॉजिक चैप्टर में। तो हम लोग इसको मॉडिफाई करके छोटा कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं कितने बड़े सर्किट का, मतलब सर्किट ये छोटी हो जाएगी और लोड उतना ही रहेगा, उसका काम वही करेगा, इसलिए इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो सी वंस अगेन गिव एन ऑल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट्स फॉर द फॉलोइंग सर्किट्स। So this circuit is given. First see this is the battery and this is the switch S1, switch S1 dash, switch S2, and this is connected to lamp L, right? This is given circuit. So what we have to write first, let P for the switch S1, Q for the switch S2 and L for lamp L. The given switching circuit can be written as, so what you have to write? Now see S1 and S1 dash or S2, S1 and S1 dash or S2. So what you have to write here? P and negation P or Q. P and negation P or Q. So negation P or Q in one bracket because they are in the one set of the circuit and they are in parallel. Means this is the symbolic form of the given circuit. ये हो गया अपना symbolic form. After that, we have to simplify it, right? So we have to simplify it. So what we have to do? Just using distributive law in this circuit diagram, in this statement. So P and negation P, this one, or as it is P and Q, we write here. By distributive law means open the bracket, जैसे एक multiplication का rule follow करते हो ठीक वैसे यहाँ पर हमने कर दिया, right? So what is P and negation P? P and negation P is always false. It is already explained in the previous exercise, in exercise number 1.4. Or as it is P and Q as it is. So F or this is false. So F or PRQ, this is totally based on this bracket. So this is equal to PRQ. But by rule, P and negation P converted F, you have to write here by complement law. And F or a letter, few seconds के लिए assume कर लो कि P है केवल. तो F or P is P, but it is P and Q. So we write here P and Q by identity law. तो इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है इतने का, ये हमें मिल गया P and Q. मीन्स ये सिर्फ 2 स्विचेज में भी काम कर सकता है, उतना ही वर्कलोड कर देगा. तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, द सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट इज, फिर से इसका न्यू डायग्राम रेडी करो इतने के लिए. तो देयर आर 2 स्विचेज ओनली एंड इन बिटवीन देम एंड, तो वी राइट हियर अ बैटरी कनेक्शंस, 2 स्विचेज इन सीरीज S1 एंड S2 एंड इट इज कनेक्टेड टू द लैंप L. तो जहाँ पर अभी ये डायग्राम था अपना इतना लंबा चौड़ा, ये बड़ा डायग्राम था, इतने बड़े डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं, मीन्स इसको हम सिंप्लीफाई करके हमने मॉडिफाई करके ये डायग्राम में ले लिया. तो छोटा हुआ कि नहीं डायग्राम. तो जब कनेक्शन छोटे हो जाएंगे तो हमारे जो आने वाले डिवाइसेस हैं आजकल वो भी क्या होंगे, छोटे हो जाएंगे. ओके, तो इसके लिए ये हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म यूज करते हैं और ये लॉज से कंटिन्यूस हम लोग छोटा करते जाएंगे. तो ये रहा इसका मॉडिफाइड फॉर्म फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड. In second question, this is the switching circuit. This is the switching circuit. This is given. So first we observe this. This is the battery. Connections are given. There are 2 branches, means it is in parallel. S1 and means it is in series. S2 or S3 means they are in parallel. And in the second branch, S3 dash, S2 dash, S1, they are continuous. That is, they are in series. So first we consider it. Let P for the switch S1, Q for the switch S2, and R for the switch S3, L the lamp L. The switching circuit can be written as. Now simplify. This means convert into symbolic form. First see this line, this one only. There are 3 switches, 1, 2, 3. So S1 and S2 are S3. So S1 means P and S2 means Q or S3 means R. So this is P and Q are R. It is in first bracket because it is in first set. For the second set, and it is a parallel using OR in the second bracket, S3 dash means negation R and S2 dash negation Q and S1 and P. Clear here? So this is the symbolic form of the switching circuit. Now see its simplified form.
So we write first P and QR are as it is here, or sorry, P and QR are as it is, or as it is. This set can be written as from this side P and negation Q and negation R. So P and negation Q and negation R by commutative law. For example, 5 plus 7 plus 9, or 5 plus 6 plus 7. 5 plus 6 plus 7 can be written as 7 plus 6 plus 5 also by commutative law. तो यहाँ पर हम commutative law यूज करके इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ एंड या कोई भी सिंबल होगा तो हम कम्प्यूटेटिव लॉ में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं एंड और के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अभी देखते हैं कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है। वी सी दैट पी एंड देखो ये दोनों में सेम है, तो पी एंड ये दोनों में हम ले कर लेते हैं कॉमन। दिस इज द कॉमन टर्म। इफ यू टेक कॉमन पी एंड, सो व्हाट विल बी रिमेनिंग इन द फर्स्ट ब्रैकेट, क्यू आर आर, these are as it is. In the second bracket, remaining terms are negation q and negation r, and you have to write here by distributive law. By distributive law we get this. जैसा कि मैंने बताया था, इसमें कॉमन करते हैं तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लिखेंगे, उसको चेंज नहीं करना है। अब इसके बाद आते हैं पी एंड, ठीक है, ये एज इट इज रखना है। अब इसको क्यू आर आर एज इट इज और एज इट इज। अगर हम इसमें से नेगेशन को आउट करते हैं, देखो नेगेशन को आउट करते हो तो अपने को क्या मिलेगा, नेगेशन क्यू और आर। तो ये नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन आर, नेगेशन कॉमन एक तरह से करते हो, मीन्स नेगेशन इज आउट, क्यू और आर। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कौन सा रूल यूज हुआ, बाई डी मॉर्गन्स लॉज। इसी को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। मीन्स ये निगेशन ऑफ क्यू आर आर को ओपन करोगे तो ये मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा। ठीक, इट इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ का यूज हुआ फॉर दिस कन्वर्जन, वी राइट हियर बाय डी मॉर्गन्स लॉ, इसके लिए लिखा गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखो ये स्टेप है, जो कि ये लॉ इसके लिए लिखा गया, तो ये स्टेप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हो। तो अब यहाँ क्या करना है, देखो इसको अज्यूम कर लो एक सेकंड के लिए केवल, ये पी है, क्या है, पी, दिस इज पी ओनली, और निगेशन पी। अगर ये पी है तो यहाँ पर क्या होगा, ये निगेशन पी हो जाएगा, क्योंकि ये क्यू आर आर है, ये भी क्यू आर आर है। तो अगर हमने इसको एक सेकंड के लिए ऐसा मान लो कि ये पी है, तो पी और निगेशन पी ये दिखेगा ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रियल में क्या है, क्यू आर आर और निगेशन ऑफ क्यू आर आर। तो अगर ये पी होता तो क्या लिखते हैं, पी और निगेशन पी इज ऑलवेज ट्रू। जैसा कि प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से वहाँ पर एक्सप्लेन के लिए किया है, स्लोली पूरा टर्म एकदम डिफाइन करके, पूरा एक्सप्लेन करके, रीजन दे करके सब बताया। तो इसके लिए एक्सरसाइज 1.4 भी रेफर कर सकते हो, या तो लॉजिकल टेबल रेफर कर सकते हो। तो क्यू आर आर और निगेशन क्यू आर आर, क्योंकि पी आर निगेशन पी क्या होता है, टी, तो ये भी तो टी ही होगा, क्योंकि देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और बाहर क्या है, निगेशन, इसमें है विदाउट निगेशन, राइट। तो बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ दिस होल ब्रैकेट बिकम्स टी ओनली। क्या मिल गया, टी, दैट इज टोटोलॉजी ट्रू। तो ये टी हो गया, जो टी कैसे हुआ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉज, ये इसके लिए रीजन है, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉज। अब पी एंड टी, तो पी एंड टी, अगर यहाँ पर टी होगा तो ये टी होगा मीन्स, और यहाँ एफ होगा तो एफ होगा, तो ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, पी के ऊपर। तो पी एंड टी इज ऑलवेज पी, पी एंड टी इज ऑलवेज पी, तो ये हमेशा ही पी होगा। और यहाँ इसका रीजन भी देखो, मैंने कॉम्प्लीमेंट लॉज के लिए यहाँ रीजन भी दे दिया है कि पी आर नेगेशन पी इज ऑलवेज टी। तो उसका अब यहाँ से देखो पी एंड टी क्या होता है, पी ओनली, बाई आइडेंटिटी लॉ, ये हो गया बाई आइडेंटिटी लॉ। तो ये बाई आइडेंटिटी लॉ हो गया यहाँ से यहाँ तक आने में। तो कितने स्विचेस बचे, अब देखो अपने स्टार्टिंग में कितने स्विच थे, स्टार्टिंग में देखो 1 2 3 4 5 6, हमने जब सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 6 स्विचेज आर देयर। और ऐसा डायग्राम था, एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, एक बड़ा सा डायग्राम था यहाँ पर, और इसी को हमने जब सिंप्लीफाई कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो सिर्फ एक सिंगल स्विच मिल रही, ओनली पी। तो देयरफॉर द सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट इज ओनली वन स्विच S1, only one switch means P, P for S1 only,
and it is connected to the lamp L and here it is battery. बैटरी से स्टार्ट करना है और कंटिन्यूस ना जाना. ओनली वन स्विच S1 बिकॉज ऑफ P ओनली वन P फॉर क्या हमने एज्यूम किया है, द स्विच S1. ये स्विच S1 हो गया, इट इज कनेक्टेड टू लैम्प L. तो इसका अपना मॉडिफिकेशन यही है कि इतने बड़े स्विचेस को, इतने बड़े सर्किट डायग्राम को हमने एक छोटे से सर्किट डायग्राम में भी दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं. तो दिस इज द मॉडिफिकेशन, modified form of the switching circuit, right? So this is very important for the IT students, computer science student, electronics and modern physics. So practice these questions completely once, twice, जितना पॉसिबल होता है उतना प्रैक्टिस करो. तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को ये लेक्चर मेरा बहुत ही पसंद आया होगा. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.